Good morning students. Today we are going to start chapter number 6, triangles. Okay. You all are familiar with the triangles and many their properties of the earlier classes. Okay. So you have to study the congruent triangles in detail. Recall the two figures are sides to be congruent if they have the same shape and same size. In this chapter we shall study about those figures which having the same about the not necessary in the same size. If two figures having the same shape are not necessary in the same size is called as similar figures. Okay, in particular we shall discuss the similarity of the triangle, applying this knowledge in the giving simple proof of Pythagoras theorem learnt earlier. Okay, so हमने पढ़ा था लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था ट्राइंगल्स, उसमें आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या हो जाएंगे? सिमिलर. ओके, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम किसकी? सिमिलैरिटी की. क्लियर? So what do you understand by these similar figures? Okay, in class 9 you have seen the all circles and the same radii of the congruent, all square with the same side of length of congruent, equilateral triangles with the same side in the length of congruent. Okay, ये सारे एग्जाम्पल्स आपने सिमिलर फिगर्स के पढ़े थे. ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि दैट ऑल congruent figures are similar but similar figures need to be congruent. Clear? One more property is two polygons on the same number of same side are similar if two points are related. There is a corresponding angle are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportional. Okay, so they both figures are polygons if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio or proportional. Clear? If this again emphasizes the two polygon on the same number of the same sides are the similar, all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio. ये दो properties आपको आनी चाहिए, है ना? Okay, for example, thus the two figures. Okay, there is either above the condition first is and second is similarity of the polygon is not sufficient for to be similar. हमने जो दो condition पढ़ी थी वो उस triangle में similarity की apply नहीं होती है polygon में. ठीक है, now we are going to start exercise 6.1. Okay, first is filling the blanks in the correct word. All circles are similar, all squares are similar, all the triangles are similar if they are equilateral. All equilateral triangle are similar. Clear? Two polygons of the same number of the sides, their corresponding angles are, ये property आपने पढ़ी, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Clear? तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं. अब इसी तरह मैंने आपको आगे बताया, ऐसे आप इसके दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दो सिमिलर फिगर के और दो नॉन सिमिलर फिगर के. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बस ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर नॉट. क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं, इनकी साइड्स इक्वल है? नहीं. सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? एक तो ये वाली, एक द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल बन रहे हैं? नहीं. या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल भी नहीं है. ओके, सो दे आर नॉट सिमिलर. क्लियर? Some more properties related to similarity of triangle that you may recall. The triangle is also polygon, so we can state the same condition for similarity of two triangles. Okay, similarity of two triangle, this is two triangles are similar if their corresponding angle are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Clear? यहाँ पे हमें ट्राइंगल को लास्ट आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? इसको सिमिलर प्रूफ करना है. और सिमिलैरिटी की हमारी दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are in the same ratio. Clear?